हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस का ये एक और टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट कर रहे थे हम लोग। तो इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंकेड टुगेदर। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है कि इज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स सिस्टम जो होता है वो लिंकेड टुगेदर होता है। तो इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड network of computers that are able to exchange information with each other। ठीक है, तो इंटरनेट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है जो कि कंप्यूटर में होता है ऑब्जेक्ट, जो कि एबल करता है हमें टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विथ ईच अदर। तो इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है? इंटरनेशनल मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, इंटर और नेट। इंटर और नेट से बना कॉम्बिनेशन वर्ड इंटरनेट, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, which began in 1950 by Windsurf, known as the father of internet। तो internet is a network of networks that consist millions of private, public, academic, business, and government networks of local to global scope that are linked by a broad array of electronic, wireless, and optical networking technologies। ठीक है, so the internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suite TCP/IP to link several billion devices worldwide। ठीक है, ARPANET मतलब क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये एक एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है जो कि वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग कंप्यूटर नेटवर्क, जिसको डेवलप किया गया है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1969। इट कनेक्टेड विथ ओनली फोर कंप्यूटर्स लाइक एप्रानेट एडप्टेड। तो ये जो ये कनेक्ट किया गया है, सिर्फ चार कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया है। एपन जो होता है अडप्ट किया गया था टीसीपी और आईपी 1983 में, एंड द network of networks becomes the modern internet। In 1969, the University of California at Los Angeles and the University of Utah were connected for the beginning of the ARPANET using 50 kbits circuits. In mid 80s, another federal agency, the National Science Foundation, created a new high capacity network called the NSF net, which was more capable than ARPANET। ठीक है, the only drawbacks of NSF net was that it allowed only the academic research on its network and not any kind of private business on it। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो उसलिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और उसके पीपल जो होते हैं वो स्टार्टेड वर्किंग टू बिल्ड देयर ओन नेटवर्क्स। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग होते हैं वो अब खुद का ऑन नेटवर्क बनाना शुरू कर देते हैं, विच वेयर लेटर इंटरकनेक्टेड विद द ARPANET एंड NSF नेट टू फॉर्म द इंटरनेट। तो दोनों के इंटरकनेक्शन से इंटरनेट तैयार किया गया। तो वर्ल्ड वाइड वेब abbreviated as the WWW or W3, commonly known as the web, is a system of interlinked hypertext documents that are accessed via the internet। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब WWW आप तो जानते ही होंगे। तो वर्ल्ड थ्री W3 भी बोलते हैं, और कॉमनली नोन एज, इसको कॉमनली बोलते हैं वेब। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिस्टम होता है जो इंटरलिंक्ड होता है हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, जो कि एक्सेस कर सकते हैं हम लोग विया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, पिक्चर्स, साउंड्स एंड मल्टीमीडिया ऑन द इंटरनेट विच इज़ फॉर्मेटेड इन HTML एंड एक्सेस थ्रू HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से ये कनेक्टेड रहता है, एक्सेस कर सकते हैं इसको। तो इसमें होता है वेब सर्वर, वेब पेज होता है और एक वेबसाइट होता है। तो वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर स्टोर्स, प्रोसेसेस एंड डिलीवर्स वेब पेजेस टू द यूजर्स। द इंटरकनेक्शन बिटवीन users and servers is done using the hypertext transfer protocol। ठीक है, तो इंटर कम्युनिकेशन जब होता है
तो यूज़र और सर्वर में, तो उसका में जो मीडियम रहता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। वेब पेजेस क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट was written in HTML that can be accessed through the internet by using the web browser. It is identified by a uniform resource locator. तो URLs के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। यू आर और एल, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। A website is a set of related web pages served from a single web domain। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? A home page, index or a main page is a web is a web is webs is a page on website. A home page usually refers to the initial or the main web page of a website, sometimes called the front page by analogy with newspapers. The first page that appears upon opening a web browser program, which is also sometimes called the start page. This start page can be a website or it can be a page with various browser functions such as visual display of websites that are often visited in the web browser. The web page or a local file that automatically loads when a web browser starts or when the browser's home button is pressed. This is called the home page. The user can specify the URL of the page to be loaded or alternatively choose example to reload the most recent web page browsed home page is the default page of the website. A personal web page, or for example, at a web hosting service or a university website that typically is stored in the home directory of the user. A hyperlink is a reference to the data that the reader can directly follow either by clicking or by hovering, or that is followed automatically a web browser। वो कॉमनली इसको क्या कहते हैं कि एज अ ब्राउजर कहते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट अलाउ यूजर्स टू access the website for retrieving, presenting, traversing information resources on the world wide web. Some of the famous browsers are Apple Safari, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Bolt, UC Browser, and Internet Explorer और Microsoft Edge। ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं। तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है इट इज a specific character string that consists a reference to a resource. In most browsers, the URL of a web page is displayed on the top inside an address bar. Is used to locate the address of a resources and protocol. URL is the entire set of directions and it contains extremely detailed information. The domain name is one of the pieces inside of a URL. An example of a typical URL would be www.bankersadda.com। ठीक है। Here are the domain क्या हो जाता है इसका? bankersadda.com। The downloading means the receive data to a local system from a remote system or to initiate such a data transfer. Uploading means refers to the sending of a data from a local system to a remote system such as server or other client with the intent that the remote system should store a copy of a data being transferred। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट होस्ट। होस्ट इज a computer or application which is used to transfer the data on the internet. Each host has a unique IP address is called the host name। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? An internet protocol address, also known as IP address, is a numerical label assigned to each device's example computer printer participating in a computer network. It acts as an identifier for a computer. It is a unique address for every computer. It is a logical numeric address that is used to identify the host over the internet network. The stable version of IP IPv4 32 bits. It is written in decimal and separated by periods। ठीक है। और लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ आईपी IPv6 है, 128 बिट का है। इट इज रिटन इन हेक्साडेसिमल एंड सेपरेटेड बाय कॉलम्स। एचटीएमएल क्या होता है? एचटीएमएल यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा ओवर द वेब। It runs on the top of the TCP set of
protocols. It uses a server client model. Domain names क्या होता है? Are used to identify one or more IP addresses. A domain name serves as an address which is used to access the website. It can be universally understood by web servers and online organizations. डोमेन टाइप्स क्या होता है? डॉट कॉम होता है. डॉट कॉम किस लिए? कमर्शियल एंड फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डॉट एडू 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 मतलब एजुकेशनल प्रोवाइडर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी. डॉट जी ओ वी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज का वो डोमेन होगा. डॉट एम आई एल मतलब यूएस मिलिट्री का साइट्स होगा. डॉट नेट मतलब इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्रोवाइडर. डॉट ओ आर जी मतलब क्या होता है? मिसलेनियस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. डॉट आई एन टी मतलब कि इंटरनेशनल ट्रीटीज. तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस. डीएनएस क्या होता है? डीएनएस ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस. डोमेन इनको आईपी एड्रेस में ट्रांसफर करता है. इट हैज अ लार्ज database of domain names and its IP addresses. An email attachment is a computer file sent along with an email messages. One or more files can attach to any email message and be sent along with it to the recipient. Hotmail क्या होता है? Was the co-founded by an Indian American entrepreneur Sabir Bhatia along with Jack Smith in July 1996. CC का मतलब क्या होता है? Carbon copy is used to it is used to share an email with one or more recipient. Both the main recipient and the other recipients can see all the mail addresses. CC in email indicates those who are to receive the copy of a message addresses family to the another. The list of CC receipts is visible in all the to all the other receipts of the messages. ठीक है. And in additional BCC एडिशनल बीसीसी क्या होता है? बीसीसी क्या होता है कि फील्ड इज अवेलेबल फॉर हिडन नोटिफिकेशन रिसिप्ट्स इन लिस्टेड इन द बीसीसी फील्ड रिसीव्स अ कॉपी ऑफ अ मैसेज but are not shown on any other receipts copy, ठीक है, including other BCC receipts. In this, the receipts of the messages and other receipts cannot see the person who all received the email. The draft folder retains copies of messages that you have started but are not yet ready to send. The first email was sent by Ray Tomlinson to himself in 1971. Internet Explorer was deprecated in Windows 10. Windows 10 में Internet Explorer deprecate किया गया था with Microsoft replacing it as a default web browser. तो विंडोज में जो डिफॉल्ट ब्राउजर था इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया. इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क फॉर इंटरनेट टूल्स but available within an organization. In large organization, intranet allows an easy access to corporate information for employees. Extranet क्या होता है? Is a private network that uses the internet protocol and the public telecommunication system to surely share part of business information. Podcast is a form of audio broadcasting on the web. It can be listened to on the go while communicating to office or even while working. नेक्स्ट क्या है? इंटरनेट कनेक्शंस. तो इंटरनेट कनेक्शन कैसे होता है? बैंडविड्थ एंड कॉस्ट आर द टू फैक्टर्स दैट हेल्प यू in deciding which internet connection is to use. The speed of internet access depends on the bandwidth. Some of the internet connection available for internet access as follows. Dial-up connection एक होता है. The dial-up is a method of connecting to the internet using an existing telephone. When a user initiates a dial-up connection, the modern dials phone number of an internet service provider speed that is designated to receive dial-up calls. The ISP then establishes the connections, which usually takes about 10 seconds and is accompanied by several beeping and buzzing sounds. The transfer speed is 56 kbps per second. Broadband connection. The term broadband commonly refers to the high-speed internet access that is always on and faster than the traditional dial-up access. It uses a telephone line to connect the internet. The transfer speed is 256 kbps. Broadband includes several high-speed transmission technologies such as digital subscriber line (DSL),
It is a popular broadband connection. It provides internet access by transmitting digital data over the wires of a local telephone network. DSL is the most common type of broadband services. It uses the existing copper telephone lines. A transfer speed in 256 kbps. Next, cable modem. This service enables cable operators to provide broadband using the same coaxial cables that deliver pictures and sound to your TV set. Most cable modems are external devices that have two connections, one to the cable wall outlet and other to the computer. They provide transmission speed of 1.5 Mbps or more. Broadband over power line. BPL. BPL is the delivery of broadband over the existing low and medium voltage electric power distribution network. It transfers speed is up to 3 Mbps. BPL is good for areas where there is no other broadband connections, but power infrastructure exists. For example, rural areas. वायरलेस कनेक्शंस क्या होते हैं? तो वायरलेस कनेक्शन जो होता है वो ब्रॉडबैंड कनेक्ट्स a home or a business to the internet using a radio link between the customer locations and the service provider facilities. ठीक है, wireless broadband can be mobile or fixed. Unlike DSL and cable, wireless broadband requires neither modem nor cables. It can be easily established in areas where it is not feasible to deploy DSL or cable. Some ways to connect the internet wirelessly are as follows. जैसे कि wireless fidelity Wi-Fi इसको कहते हैं. It is a universal wireless networking technology that utilizes radio frequencies to transfer data. Wi-Fi allow high-speed internet connections without the use of cables or wires. तो Wi-Fi networks होता है can be used for public internet access at hotspots such as the restaurants, coffee shops, hotels, airports, convention centers, and city parks. Second क्या है worldwide interoperability for microwave access. VMAX systems are expected to deliver broadband access services to residential and enterprise customers in an economical way. It has the ability to provide services even in areas that are difficult for wired infrastructure to reach, and the ability to overcome the physical limitation of traditional wired infrastructure. Second, third, क्या है? Mobile wireless broadband services. These services are also becoming available from mobile telephone services provider and others. These services are generally appropriate for mobile customers and require a special PC card with the built-in antenna that plugs into a user's computer. Generally, they provide lower speeds in the range of several hundred kbps. ठीक है, interconnecting protocols. So, a protocol is a set of rules that govern data communication. It defines what is communicated, how it is communicated, and when it is communicated. Some of the protocols generally used to communicate via internet are as follows. पहला क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल. ठीक है, a transmission control protocol, it provides reliable transport. So transmission control protocol, it provides a reliable transport services is that it ensures that message sent from sender to receiver is properly routed. TCP converts messages into a set of packets at the source, which are reassembled back into messages at the destinations. Internet protocol, it allows different computers to communicate by creating a network of networks. IP handles the dispatch of packets over the network. It maintains the addressing of packets with multiple standards. Each IP packet must contain the source and the destination address. An IP address is a 32-bit. ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो ये क्या होता है? It can transfer files between any computers that have an internet connection. ठीक है, which internet connection and also works between computers using totally different operating systems. Some examples of FTP software are FileZilla, Casablanca, ZFTP, Conqueror, etc. Hypertext transfer protocol. HTTP defines how messages are formatted and transmitted.
transmitted, and what actions should be taken by the web servers and browsers in response to various commands. Hypertext markup language HTML क्या होता है? It is used for designing web pages. A markup language is a set of markup angular bracket tags which tells the web browser how to display the web pages, words, and images for the user. Each individual markup code is referred to as an element or tag. Next क्या है? Telnet protocol. A telnet is a program that runs on the computer and connects PC to a server on the network. Telnet session start by entering valid username. Usenet protocol. The Usenet service allows a group of internet users to exchange their views and information on some common topic that is of interest to all the members belonging to that group. Several such groups exist on the internet are called the news groups. Usenet has no central server or administration. Point-to-point protocol. Point-to-point protocol triple P मतलब क्या होता है? It is a dial account which puts your computer directly on the internet. A modem is required for such connections, which transmits the data at 9600 bits per second. Simple mail transfer protocol SMTP क्या होता है? It is a standard protocol for email services on a TCP network. It provides the ability to send and receive email messages. Wireless application protocol WAP क्या होता है? A web browser is commonly used web browser for small mobile devices such as cell phones. Voice over Internet Protocol VoIP मतलब क्या है? It allows delivery of voice communication over IP networks, for example IP calls. Post Office Protocol version 3 POP3 मतलब क्या होता है? It is an internet standard protocol used by local email software clients to retrieve emails from a remote mail server over a TCP connections. तो टर्म्स जो होते हैं वो रिलेटेड टू इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WW के कौन कौन से टर्म्स होते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब इज a system of internet servers that support hypertext and multimedia to access the several internet protocols on a single interface. WW was introduced on 13 March 1989. ठीक है? The World Wide Web is often abbreviated as the web or WW. The World Wide Web is a way of exchanging information between computers on the internet. ठीक है? Web page, the backbone of the World Wide Web, is made of files called the pages or web pages containing information and links to resources, both text and multimedia, throughout the internet. It is created using HTML. There are basically two main types of web pages, static and dynamic. The main or first page of a website is known as home page. नोट करने वाली बात है कि bookmarks are links to web pages that make it easy to get back to your favorite page. Hyperlink is a piece of text which connects different documents on a web page. It is a reference data that the user can follow by simply clicking on it. ठीक है? Website क्या होता है? Group of web pages that follows the same theme and are connected together with hyperlink is called the website. In other words, a website is a collection of digital document, primary HTML files that are linked together and that exist on the web under the same domain. ठीक है? तो एग्जाम्पल के तौर पे www.carwale.com is a website है, while carwala.com/new is a web page. ठीक है? वेब ब्राउजर क्या होता है? इज अ सॉफ्टवेयर. इट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड टू लोकेट, रिट्रीव एंड डिस्प्ले content on the World Wide Web, including web pages. Web browsers are programs used to explore the internet. So we can install more than one web browser on a single computer. The user can navigate through files, folders, and website with the help of browser. नोट करने वाली बात है क्या? F11 की on window keyboard sets to full screen mode in most web browser. ठीक है? The two types of web browser as follows. दो टाइप के वेब ब्राउजर होते हैं. एक तो टेक्स्ट वेब ब्राउजर होता है, एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है. तो
A web browser that displays only text-based information is known as a text web browser. For example, Linux, which provides access to the internet in the text mode. Graphical web browser, a web browser that supports both text and graphic information, is known as a graphical web browser. For example, Internet Explorer, Firefox, Netscape, Safari, Google Chrome, and Opera. नोट करने वाले के the first graphical web browser was NCSA, Mosaic. The web server is a computer that runs website. ठीक है? A server computer will deliver those web pages to the computers that request them and may also do other processing with the web pages. ठीक है? The web browser is a client that requests HTML files from web servers. Every web server that is connected to the internet is given a unique address, is that IP address made up of a series of 4 numbers between 0 to 255, separated by a period like dot. For example, Apache HTTP server, Internet Information Services, Lightpad, etc. Note करने वाले का cookie is a small message given to a web browser by a web server. Store information about the user's web activity. ठीक है? Web addresses URL. So a web addresses identify the location of a specific web page on the internet, such as learnyoga.com on the web. Web addresses are called the URLs, stand for Uniform Resource Locator. Tim Berners-Lee created the first URL in 1991 to allow the publishing of hyperlinks on the World Wide Web. For example, जैसे google.com है तो services/index.html होता है. तो HTTP क्या होता है? प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर हो गया. www क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब हो गया. google.com डोमेन नेम हो गया. ये सर्विसेज उसकी डायरेक्टरी हो गई. इंडेक्स हो गया, वेब पेज हो गया. डोमेन नेम क्या होता है? It is a group of network resources and assigned to a group of users. A domain name is a way to identify and locate computers connected to the internet. A domain name must be unique. It always have 2 or more parts separated by a period dot. For example, google.com, yahoo.com, etc. Domain abbreviation क्या होता है? Domains are organized by a type of organization and the country. A 3-letter abbreviation indicating the organization and usually 2-letter abbreviation indicates the country name. ठीक है? Domain name system, DNS. So DNS stores and associate many types of information with domain names, but most importantly, it translates domain names computer host to IP addresses. It also lists mail exchange servers accepting email for each domain. DNS is an essential component of a contemporary internet use. Blog क्या होता है? Blog is a website or web page in which an individual records opinion and links to other site on regular basis. A typical blog combines text, images, and links to other blogs, web pages, and media related to its topic. Most blogs are primarily textual, although some focus on art, photographs, videos, music, and audio. These blogs are referred to as edu blogs. The entries of a blog is known as the post. Like a news group. News group क्या होता है? A news group is an online discussion. Is an online discussion forum accessible through Usenet, devoted to discussion on a specified topic. Online discussion group allows interaction through electronic bulletin board system and chat sessions. Search engine क्या होता है? It is a website that provides the required data on a specific topic. Search engines turns the web into a powerful tool for finding information on any topic. When a search engine returns the links to web pages corresponding to the keywords entered is called as a hit, otherwise called a miss. Many search engines also have directories or list of topics that are organized into categories. Browsing these directories is also a very efficient way to find information on a given topic. नोट करने वाली बात था कि प्रोजेक्ट लोन इज अ सर्च इंजन प्रोजेक्ट बाय गूगल फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस फॉर रूरल एंड रिमोट
areas using high altitude helium filled balloons services ऑफ इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विसेज होती है, जैसे कि हम लोग चैटिंग कर सकते हैं स्काइप या मैसेंजर ऐसे चीज़ों से, ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ई लर्निंग कर सकते हैं, ई बैंकिंग कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग, ई शॉपिंग कर सकते हैं जैसे नापतोल हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, ये भी हॉप शॉप, होम शॉप है एक्सेट्रा, ई रिजर्वेशन कर सकते हैं जैसे कि बुक कर सकते हैं रेलवे एयरवेज टिकट बुक सकते हैं, होटल रूम बुक कर सकते हैं, टूरिस्ट पैकेजेस बुक कर सकते हैं एक्सेट्रा। सोशल नेटवर्किंग जैसे कि फेसबुक, स्काइप, माई स्पेस, ऑरकुट और इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या आता है? लिंक्डइन है इज एन अमेरिकन साइट विच प्रोवाइड बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सर्विसेज। इट वाज फाउंडेड बाय द रिंग हॉफमैन इन 2002। फेसबुक क्या है? फेसबुक इज एन अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग साइट विच was founded in 2004 by Mark Zuckerberg. ठीक है। ट्विटर का है is an American company which provides social networking services. Beside this, Twitter also provides online news. Cluster क्या है? Is a group of servers that share work and may be able to back each other up if one server fails. With the webmail interface, emails are accessible from anywhere in the world. Rich text formatting helps the sender of email format the continuous contents of his email message by applying font size, bold, italic, etc. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।